Hi everyone, I hope I am live on the YouTube and you are able to see the first question on your computer screen. So basically, today we will discuss all the questions that came in shift 2 of slot 1 of the snap, right? So snap इस बार हर डे पे दो शिफ्ट्स हो रही है ना? स्लॉट 1 में दो शिफ्ट्स हुई थी, सो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स, ऑल द क्वेश्चंस दैट केम इन शिफ्ट 2, है ना? शिफ्ट 1 का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इफ यू आर नॉट अवेयर, प्लीज डू चेक आउट. The video is already posted on our channel. Fine. So can we start now? I hope it is clearly visible and audible to everyone. Just give me a few moments to check. Am I live? Okay, I think I am live. I need to change some things. Okay, just give me a minute. Is it visible? Guys, please confirm. Start करें. Okay, so solve the first question. Then I will also solve, but take 60 seconds and solve the first question. What is the answer you are getting? हाँ ठीक है. I think this is the correct answer. So let's start the question. Right. This is the official question. Memory based है, but official है. Right. So working together at their respective constant rates, A and B polish 88 square feet of copper sheet in 6 minutes. Right. So in 6 minutes, A and B together polish 88 square feet of copper. Right. So can I say that A plus B in 1 minute 88 by 6, in 1 minute they complete 88 by 6 or 44 by 3. If A's rate of polishing is 3.5 that of B, तो ये efficiency की बात करिए. Let's say B's efficiency is X, let's say it is 5x, तो A की efficiency क्या हो जाएगी? 3 by 5 of 5x, that is 3x. That means 3x plus 5x, that is 8x, is equal to 44 by 3. Or I can say x is equal to 11 by 6. Right, x is equal to 11 by 6. So now it is saying how many minutes would it take A alone to polish 165 square feet of sheet of copper sheet. So सिर्फ A की बात करिए, A को कितना टाइम लगेगा? 165. So total work required is 165 और A की efficiency क्या है? 3x, that is 3 into 11 by 6, that is 11 by 2. Right, so I can say this will be 15 into 2, that is 30. A will take 30 minutes. So C should be your answer. C should be your answer. Is everyone okay with this question? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
This is the next question. Please try this question on your own first. Take 1.5 minutes something. What is the answer? So let's solve this question. है ना? On a certain principle, compound interest and simple interest at a certain rate of interest for 2 years is 16560 and 1440, right? Find the principal and the rate of interest per annum. देखो 2 years की बात करी गई है, right? फर्स्ट ईयर में लेट से कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्स है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक्स होता है. फर्स्ट ईयर में तो इंटरेस्ट रेट सेम ही होता है. और अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में क्या होगा? Simple interest will remain same, but compound interest will become 1 plus r into x. तो अब इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं, ये x से x कैंसिल हो जाएगा. बेसिकली जो डिफरेंस होगा वो इनमें होगा. ये दोनों तो सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. सो आई कैन से जो मेरा ये डिफरेंस होगा 16560 एंड 14400 में, वो डिफरेंस यही होगा. दैट इज 1 प्लस आर इंटू एक्स माइनस एक्स. दिस शुड बी इक्वल टू 16560 14400. दैट इज 2160, राइट. और ये मेरा क्या वैल्यू आ गया? x इंटू आर इज इक्वल टू 2160, राइट. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो उसने क्या बोला हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 14400 है. ये 2 years का सिंपल इंटरेस्ट है. दैट मीन्स 2x की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 14400. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका हाफ, दैट इज 7200. इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ x, राइट, तो आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 216 डिवाइडेड बाय 720, राइट. और आई कैन से 54, और आई कैन से सो दिस इज r इज माई 30%. r मेरा 30% आ गया, राइट. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी देयर, दिस ऑप्शन विल नॉट बी देयर, इधर सी और डी, राइट. अब अगर आर आपका 30% है और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपका 7200 है, सो यू कैन से प्रिंसिपल इंटू 3/10, दैट इज 30%, शुड बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. तो यहां से आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई? 24,000 is the value of principal, right? So value of principal is 24,000 and interest rate is 30%. So C is your correct answer. Hence C is your correct answer. Understood? Everyone please confirm. All right, let's go to the next question. Take your time and calculate the value of this given expression. चलो ये साथ में सोल्व करते हैं, राइट. देखो पहली बात तो ये देखो, जब भी आपका रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर इज हाफ, है ना. पावर इज हाफ, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ रूट.
राइट। अब देखो अगर रूट की पावर हाफ है तो फर्स्ट थिंग आई कैन से इज कि 4 की पावर 6 x स्क्वेयर राइट इंटू 25 y/2 9 की पावर z/4 इस पूरे की पावर हाफ है, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 6 x स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी पावर हाफ करूंगा, सो बेसिकली अगर ये पावर ऐसे होती है तो दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 6 x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पावर हाफ भी आ जाएगी, तो यहाँ पे ये हाफ भी आ जाएगी, राइट। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, दैट इज 5 का स्क्वायर इंटू y/2 इंटू हाफ, और यहाँ पे भी कर सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू z/4 इंटू हाफ। सो ये हाफ से ये हाफ, ये टू कैंसिल, सो दिस विल बी 2 की पावर 6 x स्क्वायर। ये टू से आपका लेट से ये टू कैंसिल हो गया, दिस इज 5 की पावर y/2, राइट। एंड ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, दिस विल बी 3 की पावर z/4, राइट। सो कौन सा आंसर आया मेरा ऑप्शन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? विच इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस? थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, sorry, B is the correct option, this is my correct option. Understood everyone? Chalo, let's move to the next question. Try this question on your own first. First try this question on your own. Also be a part of our community on Telegram and WhatsApp. All links are there in the description, and also share the video with your friends. That will help us a lot in reaching to a lot of snap aspirants. Please like the session, like the video if you are watching it live. इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। लेट से क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ 776 was divided among 300 boys and girls in such a way that each boy gets 2.4 and each girl gets 2.8. Find the number of girls, right? So you know कि b plus g, number of boys plus girls कितने हैं मेरे, 300, right? Each boy gets 2.4, so can I say each boy gets 2.4, तो total boys को इतना मिला होगा, प्लस ईच गर्ल गेट्स 2.8, तो टोटल गर्ल्स को इतना मिला होगा, और इसका इक्वल किसके आएगा, 776 के, दिस इज इक्वल टू 776। नाउ व्हाट आई कैन डू टू सोल्व द टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, इस इक्वेशन को मैं 2.4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दैट इज 2.4b प्लस 2.4g should be equal to 720. So now I can subtract this equation. I will get 0.4g is equal to 56, or g is equal to 56 into 10 by 4, right? That is equal to 140. g की वैल्यू 140 आ गई, तो ये इक्वेशन से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b will be 160. You have to find the number of girls, so the correct answer will be 140, है ना। देखो कितने कितने डिसेंट क्वेश्चन आते हैं स्नैप में, राइट। दैट्स वाई ऐसे कि स्नैप के लिए तुम्हें कोई और कोर्स या तुम्हें कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है, अपना कैट का सिलेबस अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ टू ace the quant section for the snap. Try this question now. Try this question.
देखो ये शिफ्ट वन में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था, इफ यू रिमेंबर। शिफ्ट वन की अगर किसी ने वीडियो कवर की है, राइट, एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन था। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं अक्रॉस द शिफ्ट्स। अंडरस्टूड? टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओ यू अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मॉडल। द पॉइंट इज कि ऐसा क्वेश्चन शिफ्ट वन में भी आया था, राइट, एंड देयर कैन बी सिमिलर क्वेश्चंस इन अदर शिफ्ट्स आल्सो। सो इफ यू आर रीअपियरिंग फॉर द स्नैप, आई थिंक दिस सीरीज विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इक्वल साइजेस, राइट, and no two types of size are mixed, right? So this is a very classic question of HCF, right? आपको सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, you have to find the HCF of 435, 493 and 551, 551, राइट। सो यहाँ पे आपका जितना भी टाइम लगता है ना, वो सिर्फ आपका किस में लगता है, वो आपका ये नंबर को ब्रेक डाउन करने में लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 435 का मुझे ब्रेक डाउन पता है, 5 इंटू समथिंग होगा, दैट इज 5 इंटू लेट से 87, और फिर इसका मैं फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूं, 5 इंटू 3 इंटू 29, राइट, ठीक है। एंड 493 का भी आई कैन ब्रेक डाउन द नंबर इंटू 29 इंटू 17, and 551 I can break it down into 29 into 19, right? So this is my number, this is another number, and this is one another number. So इनका HCF मुझे क्लियरली दिख रहा है। व्हाट इज HCF? HCF is 29, HCF is 29, राइट। सो यहां से मेरे कितने पैकेट्स आएंगे, यहां से मेरे कितने पैकेट्स आएंगे, इफ आई मेक द पैकेट्स ऑफ 29 बैग्स, राइट, तो यहां से 5 इंटू 3 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 29, यहां से आई विल गेट 15 पैकेट्स, यहां से आई विल गेट 17 पैकेट्स, यहां से आई विल गेट 19 पैकेट्स। सो टोटल ऑफ दिस विल बी माई आंसर, दैट इज 51, 51 शुड बी माई आंसर। अंडरस्टूड है ना? सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आपका शिफ्ट वन में भी आया था, है ना, डिट्टो क्वेश्चन आपका शिफ्ट वन में भी आया था, राइट। Any doubts? All right, let's move to the next question. Solve this question on your own first. Tell me what is the answer. Everyone, please take your copy and pen. Try the question within, try to solve the question within 90 seconds. Then I think you should be good to go. देखो, this is 10-second question. This is 10-second question, to be very honest. मतलब everyone should be able to solve the questions like this in the exam. Pure sitter question है. राइट, देखो इसमें ये क्वेश्चन में कुछ तुम्हें करना ही नहीं होता। cos 0 1 2 this till 150, you have to find the multiplication of each other, right? यहां पे कहीं ना कहीं देयर विल बी cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। तो अगर इनमें से एक भी टर्म 0 है, दैट इज cos 90 इज 0, देन this whole term will become 0, this whole term will turn into the 0, राइट। सो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 0। इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सो 0 इज योर आंसर, 0 इज योर आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज लाइक द स्ट्रीम if you are liking the content, if you are liking the quality, please give it a like on the stream, and also share it with your friends in other groups so that everyone can get an advantage through this channel for the upcoming snap slots. Now try this question. This is basically a series question. What will be the next term?
I think 1 6 is also there. There is a little correction. So 5, 6, 16, 57, 244, and 1245. Then you have to find the next term. There is one correction, my bad. यार देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट व्हेन इट कम्स टू द स्पीड बेस्ड एग्जाम, मे बी यू शुड नॉट अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और मे बी इट डिपेंड्स, इट इज अ पर्सनल चॉइस, बट व्हाट आई बिलीव इज कि ऐसे क्वेश्चंस में जब तुम अटेम्प्ट करोगे यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वेयर यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देर आर अदर सिटर क्वेश्चंस which could have been attempted first, right? So my suggestion would be ki to put all these questions, all these type of questions at last, because these questions are a sort of time waster है ना for a lot of people. तो यहाँ पे यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वेयर एज कोई और क्वेश्चन है वहां पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट स्टिल लेट मी गिव यू द पैटर्न कि आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, राइट? सो बेसिकली हमारा था 5 6 16 57 244 एंड 1245, राइट? सो यहाँ पे व्हाट दे डिड इज 5 into 1 + 1. यहाँ पे व्हाट दे डिड इज 6 into 2 + 4. यहाँ पे दे डिड इज 16 into 3 48 + 9. यहाँ पे 57 into 4 + 16, एंड यहाँ पे 24 into 5 + 25, एंड यहाँ पे 1245 into 6 + 36. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, राइट? यहाँ पे बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई +1 का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई +2 का स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई +3 का स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई +4 का स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई +5 का स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई +6 का स्क्वायर. So 1245 into 6, that is 8, not 8 for this. 6 5 ja 30. 7470 + 36. So my answer should be 7506. 7506 is the करेक्ट आंसर, है ना? थोड़ा सा सोचने का है यहाँ पे, एंड मे बी अ लॉट ऑफ यू माइट हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो मे बी इट इज अ गुड चॉइस टू लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन राउंड 1, है ना? राउंड 1 में आप यहाँ पे लीव करोगे, राउंड 2 राउंड 3 में यू कैन प्रेफर टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन the question is of simple interest, compound interest. Please attempt this question on your own first for the first 60 to 90 seconds.
ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो सकता है फॉर सम स्टूडेंट्स, राइट, बट लेट्स सी हाउ वी कुड हैव done this type of question in the exam. क्या बोल रहा है, rupees 45,000 were deposited for 4 years at compound interest. If the rate of the interest was 6% per annum for the first year and it increases every year by 1%, then find the approximate amount at the end of 4 years. First year के लिए 6%, second year के लिए 7%, then 8% and then 9%. So basically you have to do 45,000 into 1.06 into 1.07 into 1.08 into 1.09, right? You have to calculate this value. But directly आप multiplication से value calculate करोगे, without the calculator it will be very difficult, right? It will be very difficult for anyone. So what you could have done in this type of question, you already know the successive परसेंटेज कैलकुलेशन, राइट? अगर आप भी कोई भी वैल्यू को 6% एंड 7% से इंक्रीज करोगे, व्हाट विल यू गेट? सेम फॉर द 7 एंड 8 या वट एवर इट इज. सो बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज कि 6 एंड 7% से इंक्रीज करूंगा तो हाउ मच नेट सक्सेशन आई विल गेट, राइट? 6 एंड 7% का क्या होगा? 6 + 7 13%, है ना? तो ये हो जाएगा मेरा 13.42%. मैं 6 और 7 अलग अलग करने की जगह आई कैन डायरेक्टली इंक्रीज द वैल्यू बाय 6 and 7%, राइट? एंड 8 and 9 में व्हाट आई कैन डू, 8 + 9 is 17, so this will be 17.72%. Now I have to increase the value by 13.42% and then I have to increase the value by 17.72%. अब इनका भी मैं नेट सक्सेशन देख लेता हूं, है ना? नेट इंक्रीज कितना आएगा? वाई आई एम गोइंग थ्रू दिस अप्रोच? बिकॉज द ऑप्शंस आर very different, right? Options are not close at all, right? They are very far from each other, so I can calculate some approximate value, right? So 13 and 17 का अगर मैं net change देखूं, so 17 plus 13 it is 30%, so it should be somewhere 30 to 31%, ऐसा कुछ होगा, right? 30 to 31%. For the sake of easiness, right, I can assume it to be 30%. So ये total को मैं क्या कर सकता हूं कि ये मेरा 30% का net increase होगा. So 45,000 उसमें 30% ऐड कर दूंगा. What will be the 30% of this value? It will be 10,500. No, 13,500. It should be 13,500. So this is approximately close to 58,500. So I got to know that my answer should be close to 58,500, right? What is the option that is closer to 58,500? What is the option that is closer to 58,500? That is option C. That is option C. Hence option C is my correct answer. अगर मेरे options काफी अलग अलग होते, मतलब काफी similar होते, let's say 60,000, 59,000, 61,000, then it would have taken a lot of time. In that case, I would have skipped this question. But यहाँ पे जब आपको clearly दिख रहा है, the options are way different from each other, then obviously you can go for the approximate answer, right? Obviously you can go for the approximate answer. Understood? Let's do this question. राइट, सो दिस क्वेश्चन इज अ डिट्टो कॉपी ऑफ कैट 2023 क्वेश्चन, राइट? अगर किसी को याद भी होगा, राइट, यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन. राइट, ये बेसिकली एक कैट 2023 का उन्होंने डिट्टो उठा के दे दिया था क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई they did this, but yes, this was the question from cat 2023. This is the exact question. I think it came in slot 1 or slot 2, I don't remember exactly. Also, before moving ahead, there is just one announcement. So we have also launched our ZAD DM booster course, right? And where we are covering all DM and also QADI for the last 8 years. For the last 8 years.
So if you want to enroll, you can just visit on our website, that is www.roadtocat99.in/learn, and you can enroll there. We are covering everything around ZDM and QADI. Mainly regarding the Z, I think the past year papers are the golden source, golden gem, right? And if you want to do anything else, I think you can follow the different material, but past year papers are more than enough to ace the ZDM or ZQADI or ZVRC. I have scored 99.9 plus for the 3 consecutive times in the Z. And yeah, so now let's see this question, right? ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है वो देखो. Let n be a least positive integer such that 168 is a factor of 1134 power. It should be power n. Yeah, this is power n, right? If m is the least positive integer such that 113 power n is a factor of 168, this should be power m. Then find the value of m plus n, right? So basically इसमें कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन में इतना कुछ बड़ा नहीं था, राइट? अगर आपने ऑलरेडी किया होगा, कैट 2023 का क्वेश्चन था डिट्टो. 168 को पहले तुम्हें ब्रेक करना है. सो 168 इज 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7. दिस इज 168, राइट? एंड फैक्टर ऑफ 11349 मतलब 1134 पावर n को जब आप 168 से डिवाइड करोगे, you should get answer as 0, remainder as 0, right? So 11349 is basically 2 into 3 की power 4 into 7 की power n. That means you have, when you divide 2n into 3 की power 4n into 7 की power n, when you divide this number by 168, that is 2 की power 3 into 7, this should give remainder as 0, right? So यहाँ से what is the least positive value of n? What is the least positive value of n? N can take any value from 3 or greater than 3. 3 or greater than 3. So n की वैल्यू यहां से आपकी क्या आ जाएगी? 3, राइट? यू गॉट द वैल्यू ऑफ n एज 3 बिकॉज आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना था. सो वैल्यू ऑफ n इज 3. यू गॉट टू नो दिस, राइट? नाउ m पे बात करते हैं. इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 पावर n इज ए फैक्टर ऑफ 168 पावर m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, राइट? अगेन सिमिलर बोला है ना. 1134 पावर n. अब देखो n आपका डिफाइन हो गया, n की वैल्यू 3 आपकी डिफाइन हो गई, राइट? सो यू कैन राइट 1134 क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3, right? And now 168 power m is a factor of this. That means if you divide this number by 168 power m, that is 2 की power pm into 3 की पावर m into 7 की पावर n, राइट? सो यहां से आपको m की वैल्यू लीस्ट लेनी है. यहां से आपको m की वैल्यू लीस्ट लेनी है. व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m? व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m? अगर इसका आपको रिमाइंडर 0 रखना है ना, ये देखो 12 यहां पे है तो यहां पे वैल्यू आपकी, sorry, I have done the opposite way. This is a factor of 168 power m, so ये opposite हो जाएगा, my bad. So this should be 2 की power 3m into 3 की power m into 7 की power m divided by 2 की power 3 into 3 की power 12 into 7 की power cube. इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना? Forget about this thing. तो यहां से आपको m की वैल्यू क्या पता लगी? What is the minimum value of m? Minimum value of m should be 12. Minimum value of m should be 12, right? So in the question, what is asked? The value of m plus n. The value of m plus n will be 12 plus 3. That is 15. 15 is the correct answer. 15 is the correct answer. Understood? Everyone. Now let's go to the next question, right? Let's quickly solve this question.
दिस इज अगेन ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, है ना, या एलसीएम पे बेस कह सकते हो, राइट। सोल्व दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द smallest number between 2000 and 3000 which is exactly divisible by 21, 24 and 28, right? So there are a lot of methods. अगर options दिए होते I could have directly gone through the options, but यहाँ पे none of these भी यहाँ पे दिया होता है snap में. So आपको अगर सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है 24, 21, 24, 28 से जो डिविजिबल हो, so I can say that smallest number will be LCM of 21, 24 and 28. इनका LCM होगा the smallest number, राइट। और एलसीएम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर लो, दिस इज 3 into 7, 24 विल बी 8 into 3, 28 विल बी 2 की पावर 2 into 7, right? So LCM will be 3 into 7 into 2 की पावर क्यूब, right? So that is 8 into 3 into 7, that is 168 is the smallest number, but you have to find the number that is between 2000 and 3000, right? The smallest number between 2000 and 3000. अब आप क्या करोगे, इसके मल्टीपल्स लेते जाओगे 168 के, right? 168 into 2, 168 into 3, like this. तो क्लोजर टू 2000 लेके जाना है, सो 1680 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन लेट से 168 इसमें ऐड कर दूंगा मैं, सो आई विल गेट 1848, देन अगेन 168 ऐड कर दूंगा, so I will get 2016, right? So 2016 is the number that is the least number and divisible by 21, 24, 28. So 2016, is it in the options? Yes, this is in the option, so C will be my correct answer. C will be my correct answer. Understood? Any doubt so far? Let's move to the next question. Again, try this question on your own first, and then let's proceed with the question. Shall I give you time to solve the question, or should I directly solve it? Guys, let me know. Do you want to solve with me, or shall I proceed? Cool. Okay, let's solve with me. क्या बोल रहा है, इन ए स्कूल इफ 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड एंड 50 लेस सिलेक्टेड देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड स्टूडेंट्स वुड हैव बीन 7:4, है ना। सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो 7x/4x, राइट। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर 100 स्टूडेंट्स लेस अप्लाइड एंड 50 लेस सिलेक्टेड। ओरिजिनल रेशियो क्या होगा, ओरिजिनल रेशियो की बात करूं, अगर ओरिजिनल की बात करूं, है ना, तो सिलेक्टेड तो 50 मोर हो जाएंगे, दैट इज 7x+50, राइट, एंड 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड। तो अप्लाइड तो देखो 7x+4x 11x ने किया होगा, इनमें से कुछ सिलेक्ट है कुछ अनसिलेक्ट है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 11x+100 ओरिजिनल टोटल, बिकॉज 100 स्टूडेंट्स लेस अप्लाइड वाला केस है ये, तो ओरिजिनल 11x+100, तो अनसिलेक्टेड कितने हो जाएंगे 4x+50, तभी तो इसका टोटल 11x+100 आएगा। So how many students had applied if the ratio of selected to unselected students was 3:2? Selected to unselected का original ratio कितना दे रखा है 3:2, 3:2, and you have to find the value of how many students had applied, है ना। Applied means 11x+100, you have to find this value,
So let's solve this equation. That is 14x plus 100 is equal to 12x plus 150, right? So 2x is equal to 50 and x is equal to 25, right? So 11 into 25 is what? 275 plus 100. So 375 should be the correct answer. 375 should be the correct answer. Understood? समझ आया ये क्वेश्चन everyone? Okay, let me give you 90 seconds for each question and then we will solve the question after 90 seconds. Okay. Let me bring the stopwatch. So we will stop when 30 seconds are left. Try this question. What is the answer? Let's solve this question. क्या बोल रहा है? Ritu wants to make a trapezium such that AB is parallel to CD, right? Let's say AB is parallel to CD. So this is AB, this is AB, and this is CD, and these lines are parallel. I don't know the length, so I'm not commenting anything on the lengths. So this is AB, this is CD. Okay, this is A, this is B. Somewhere it should be C and then D. Angle ABC and BAD are 90 and 45. ABC का angle कितना है? 90. So ABC. So for 90 this should be a straight line, right? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि angle ABC is 90, something like this. और यहाँ पे then this will be the C, right? So ABC is 90. This is 90 degree. And angle BAD is 45. BAD. So BAD 45 मेरा कुछ ऐसे बनेगा. Okay, then I have to do something like this. This is 45. This is 45. BAD. Right. अब देखो ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनका सम 180 होगा. इफ दिस एंगल इज 90, दिस विल बी 90. ये 45 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 135. फिर क्या बोला? लेंथ ऑफ CD इज 5. CD की लेंथ मेरी 5 है एंड BC की लेंथ 4 है. दिस इज 4. Find the area of the trapezium. So basically what is the area of trapezium? Half into height into sum of parallel sides, that is CD plus AB. You know the height is 4, so 4 into half, that is 2, into CD की value 5, plus you have to find the value of AB. AB की value.
For AB, what you can do, you can drop a perpendicular from here. तो ये लेंथ मेरी 4 हो जाएगी. दिस लेंथ इज 5, है ना, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, राइट. अब देखो अगर ये 4 है, 45 के सामने वाला ये 90 है, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45. सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो अगर ये 4 है तो दिस विल ऑल्सो बी 4. सो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 9. So 9 plus 5, 14 into 2, that is 28 is the required answer. 28 is the required answer for this question. Understood? Now let's solve this question. Take 1.5 minutes and then we will start. What is the answer that you are getting? Okay. Let's solve this question. क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मार्क्स 30% above the cost price and gives a discount of 15% on the mark price. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kg for 800 gram. Find his actual profit percentage. अगर आपने मेरी faulty बैलेंस की क्लास कवर की होगी ऑन द यूट्यूब और ऑन द पेड कोर्स, यू वुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स. क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स अप 30% above the cost price. सो यहाँ पे 13/10 and gives a discount 15% on the mark price. So 15% का discount, that is 85/100, right? And uses a faulty balance which reads 1 kg for 800 grams. So that means 10/8 or 1000/800. So you have to just solve this and whatever the answer will be your correct answer or your final answer, right? देखो यहाँ पे 30% का increase, 15% का loss and 1000/800, that means 25% का profit यहाँ पे. So 00 से 00 got cancelled. So this is 10 से 10 यहाँ पे got cancelled. So 5 जा 17, 5 जा 2, right? उसके बाद I think you need to just do the calculation part. 17 into 3, 17 into 13 divided by 160, right? So let's see. So what is 17 into 13? It is 221 divided by 160, right? So 221 divided by 160 is approximately भी देख सकते हो, right? There is no need to find the exact value. It should be something around 1.3, right? अब जैसे ही 1.3 पता लग गया, you know 3 point something आंसर होगा, तो 45 तो कभी भी नहीं होगा, right? Second term देखो 1.38, that means 38, this should be 1.38. That is not in the option. Just give me a minute.
कुछ गलती करी है क्या यहाँ पे हमने? Okay, I think there is a mistake. So this is 38.125%. This is 38.125%, right? So जैसे ही आपको पता लगा 1.38, that means 38% का profit हो रहा है, right? So 32% will not be there, 34% will not be there. So 38% is my answer. So what I'm trying to convey is that you don't need to find the exact value, है ना? Generally in the snap options are very different. Options are very डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, राइट? आपको फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, एंड यू शुड हैव दैट थिंग इन माइंड कि यार स्नैप का एग्जाम देने जा रहा हूँ, स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की अगर एक आधे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, सो आई विल लीव दैट क्वेश्चन, राइट? सो यू शुड हैव दैट थिंग इन माइंड, ठीक है? नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है? You have to decode the pattern here, right? Whatever the pattern will be, you have to decode that कि ये digits कैसे आ रही हैं. देखो, लेट मी डू दिस क्वेश्चन फॉर यू, है ना? आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, राइट? यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में वी स्टार्ट फाइंडिंग द पैटर्न फ्रॉम द वेरी बॉटम, राइट? बॉटम से स्टार्ट करते हैं. ये 5 और 3 का कुछ यहाँ पे 5 आया होगा, 6 और 3 का कुछ 8 आया होगा, एंड 6 और 4 का यहाँ पे कुछ आया होगा, राइट? सो वी कैन सी दैट 5 into 3 15, right? 3 into 6 18, and 6 into 4 24, right? This is one thing that we are getting, ठीक है? अब यहाँ पे 15 का 5 आ रखा है, 18 का 8 आ रखा है, देन वी कांट कमेंट कि 24 का 4 आएगा या क्या आएगा. वी हैव टू फर्दर चेक कि जो हमारा पैटर्न है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा. सो यहाँ पे देखो 30 कैसे बना है, 8 into 4 दैट इज 40, 40 का 30 बन गया, राइट? और यहाँ पे भी हमारा कुछ बन रहा है सेम. यहाँ पे देखो 102 एंड 30 दैट इज 3060. तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो यहाँ पे 15 था उसका -10 5 आ गया, यहाँ पे 40 का -10 30 आ गया, 306 का -10 305 आ गया, 18 का -10 8 आ गया. तो यहाँ पे 24 का -10 क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? दिस वैल्यू शुड बी 14, राइट? और आप 14 इंटू 8 करोगे दैट इज 112. तो यहाँ पे 112 का -10 102 आ गया, राइट? सो 24 का -10 करोगे, 14 will be your correct answer. 14 will be your correct answer in this case. Understood? Now let's move on to the next question, right? Please do this question on your own first. You can do this question within 60 seconds. Try to do this question. देखो क्या बोल रहा है. इन ए बॉक्स देर आर 3 red marbles, 3 blue marbles and 7 green marbles. If 2 marbles are picked randomly, find the probability of picking 2 non-green marbles from the box. है ना? 2 non-green marbles मतलब you have to completely ignore the green marbles, right? So my total cases will be, if I have to pick 2 marbles randomly, so total marbles are 3 plus 3 6 plus 7 13. So 13C2 is the total cases, right? So ignoring the green marbles, because I have to pick the non-green marbles, so ignoring the green marbles, my favorable cases will be 3 and 3. Out of these 6 marbles I have to pick any two, that is 6C2,
right? So I can write this as 6 into 5 divided by 13 into 12, because जो divided by 2 है वो तो cancel हो जाएगा. So 6 से मेरा ये 2 cancel, so my final answer should be 5 by 26. My final answer should be 5 by 26. This is a complete sitter question. और probability या permutation and combination के ऐसे ही question आते हैं, है ना? कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एग्जाम में. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कवर द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 1500 आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ 120 पैसा पर आर्टिकल. दैट मीन्स 1.2 रुपीज पर आर्टिकल कह सकता हूं, right? He fixed the selling price such that if only 1200 articles are sold, he makes 80% profit on the outlay. However, 240 articles got spoiled and he was able to sell the remaining stock at this price. Find his actual profit percentage as a percentage of total outlay. So basically पहले ये देखो, the cost is cost for one article, cost price for one article is 1.2 rupees, right? So I can say cost price for 1500 article will be 1.2 into 1500, right? So this will be 1800 rupees, right? So cost price of 1500 article is 1800 rupees, right? He fixed the selling price such that if only 1200 articles are sold, let's say selling price of one article is X, so selling price of 1200 article will be 1200X, right? So he fixes the selling price such that if only 1200 articles are sold, he makes 80% profit on the outlay. Outlay means 80% on this part. Cost price उसका 1800 ही रहेगा. So 1200x is my selling price. Selling price is equal to cost price plus profit, है ना? तो cost price मेरा क्या आएगा? 1800 plus profit आपको कितना हुआ है ना? 80%. 80% of what? 80% of what? 80% of outlay. Outlay is 1800, है ना? 1800. इसका 80%, right? 80% of this figure will be 1440, right? So I can say 1200x is equal to 3240. So what is the value of x? The value of x is 2.7. तो आपको selling price पता लग गया कितना होगा? 2.7. Did everyone get this answer? Now what he's trying to say is, however, 240 articles got spoiled and he was able to sell the remaining stock at this price, right? 240 articles got spoiled. So now he has 1500 minus 240, that is 1260 articles. And he is selling these articles at this price, that is 2.7. So selling price, the total selling price he will receive is 1260 into 2.7. राइट? थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव लग रहा है, राइट? दैट इज 3402. Find his actual profit percentage. So actual cost is 1800. He is making 3402. So profit will be 1602 divided by 1800 into 100. So 0 से 0 cancel. So I can say 9 and 801, and this should be 89%. So 89% is my actual profit. 89% is my actual profit in this case, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव लग सकता है, बट आई थिंक द कैलकुलेशन वाज ऑन द इजियर साइड, राइट? थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट कैलकुलेशन थोड़ा डुएबल था, है ना? विदाउट कैलकुलेटर इट कुड हैव बीन डन. 16 देखते हैं. राम एंड श्याम आर 10 kilometers apart. They both see a hot air balloon passing in the sky, making an angle of 60 and 30 respectively. What is the height at which balloon could be flying? Right? So let's say this is the position of Ram, this is the position of Sham, and they are 10 kilometers apart. Right? So Ram is making an angle of 60 degree with the hot air balloon. Let's say the hot air balloon is somewhere here. So this angle is 60 degree. This angle is 30 degree. And this is the height. This is the height. This is the distance that we don't know. Right? So this angle is 60 degree.
this angle is 30 degree, and this is the height that we need to find, right? This is the height that we need to find. Let's say the value of this is h, so we need to find the h. So अगर ये 30 है, this angle will be 60, right? So 30, 60 एंड 90 का साइड्स का रेशियो क्या होता है? 1√3 and 2. सो अगर 30 वाली साइड h है तो 60 वाली साइड क्या हो जाएगी? h√3, right? This is the first thing. Second, if I talk about this triangle, this bigger triangle, uh, this bigger triangle, राइट? तो यहाँ पे 60 के सामने वाली साइड h है, तो दिस एंगल मस्ट बी ओके, this diagram is wrong. I think this diagram is wrong because actually I forgot to mention one thing कि जब हम ऐसे क्लोजर जाते हैं ना, तो मेरा जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जो बैलून है, जो हॉट एयर बैलून है, वो दोनों के बीच में है. सो द डायग्राम विल बी लाइक दिस. लेट्स से दिस इज द हॉट एयर बैलून, राइट? सो दिस इज वन एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज अनदर एंगल ऑफ एलिवेशन. सो राम का और ये टोटल 10 है, राइट? राम बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, and this is 30 degree का angle, and this is my height, right? So I'm quickly doing the calculation. This will be h√3 and this will be h by root 3, right? So h by root 3 plus h√3 is equal to 10. So I can write h by root 3 plus h√3 is equal to 10. So 4h is equal to 10√3. So h is equal to 10√3 by 4. Are we making any mistake? This should be 5 by 2. Just give me a minute. See, I think 2.5√3 is the correct answer, but we can do it in some another way also, right? अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो what we can do is, right? Let's say hot air balloon is there. So यहाँ पे मेरे दो एंगल्स बन रहे हैं, right? तो लेट्स से दिस इज 10 है ना. अब राम एंड श्याम की मैं पोजीशन इंटरचेंज कर सकता हूं बिकॉज जो मेरा आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में नहीं है. सो आई हैव टू डू इट इन अनदर वे, राइट? So this is 60, this is 30, and this is my height. So this will be h by root 3. If this is h, this will be h by root 3. अब बड़े ट्राइंगल पे फोकस करते हैं. If this is h, then this whole length will be h root 3. So I can say h root 3 is equal to 10 plus h by root 3. That means h root 3 minus h by root 3 is equal to 10, right? And then I can say 10 root 3 is equal to 2h, or I can say h is equal to 5 root 3. So in this case 5 root 3 is my correct answer. It could have been 2.5 root 3 also, right? It could have been 2.5 root 3 also, but the point is
I think if the question has been more clear, it would have helped the students. But otherwise, एक दो केस लेके जब आप करोगे, you would be able to figure it out, है ना? दो ही केस बनते हैं, या तो राम एंड श्याम ऐसे हो और बैलून बीच में हो, या फिर बैलून इज ऑन वन साइड एंड राम एंड श्याम आर ऑन द अदर साइड. Now let's focus on the question 18, right? क्या बोल रहा है? एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रवि फॉर जनवरी टू जून, राइट? So January to June is 6 months. So the average expenditure for 6 months is 3,200. He spent 3,000 in July, 3,600 in August, this in September, October. If his expenditure in November is 50% and his average monthly expenditure for the entire year is this, then find the Ravi's expenditure in the month of November. बहुत simple question है ना? Averages का. From January to June उसका total expenditure क्या है? Average is 3,200, so total will be 3,200 into 6. That will be 19200, right? Then जुलाई का एक्सपेंडिचर उसका 3,600, अगस्त का सॉरी जुलाई इज 3,000, अगस्त का 3,600, सितंबर का 3,900 एंड अक्टूबर का 4,200, right? And if his expenditure in November is 50% that of December, so let's say December का 2x है तो November का x हो गया. So total year का expenditure ये है, अगर मैं इसका total करूँ plus 3x तो 0 0, this is 8 10 19, 8 10 19 10 13 16 19 23, 33900 plus 3x is the total expenditure for the year, right? And average expenditure for the year is 3,200, so total expenditure for the year क्या हो जाएगा? 3,200 into 12. So can I say 33900 plus 3x is equal to 38400. So value of 3x is equal to 005 5500. Is this the correct? Oh, I have to check it. I think we made some mistake here or what? Double 390 is correct. Plus 3x, 3,200 into 12 is 38400 minus 33900. This should be 4,500. This is 4,500. So this is 4,500. The value of x is equal to 1,500. The value of x is 1,500. आपको find क्या करना था? Ravi's expenditure in the month of November. In the month of November, it should be 1,500. It should be 1,500. Understood? Understood? Now let's move to the next question. Okay. So we have 18 questions only. Is it? Yeah. We have this many questions, but let's do a revision of all the questions. And if you like the session, please hit a like and please comment under this video and also share it with your friends so that whosoever is appearing for slot 2 or slot 3 can help a lot from these sessions, right? And also subscribe to our channel and join our official Telegram group. The links are in description. Right, देखो, this is the first question. I think this is based on simple time and work, and I think everyone should have done this question, right? Coming on to this question on a certain principle, again, I think it requires a little bit understanding of simple interest, compound interest. But since the data is given for 2 years only, the people who have very limited understanding of SI and CI can also do these type of questions, and even the calculation was not very hard to do. So I think a good candidate should attempt this question. Otherwise, if you are on average, I think you can ignore this question for a moment. This question could have been done by everyone, right? Even a small understanding of the how the powers are opened up would help here, and nothing else was required in this question. It was a sitter, right? So first question was a sitter, third question was also a sitter. Fourth question again it completely depends on the average part, and even when I consider the average, it was not something complex, right? You have to just do the multiplication part, and even not the multiplication, it was more about solving the two equations and two variables. So I think you could have done this question also. This was the question that was repeated. I think it came in the slot 1 also, the similar question.
Maybe those who don't have understanding about how to go with this question, I think from now onwards you should have definitely attempt this question in case it reappears in slot 2 or slot 3, right? There is nothing in these type of questions. You are only expected to find HCF, and after finding the HCF, just divide the number and sum and do whatever you are asked to do, right? This was complete sitter. It could have been solved in 10-20 seconds only, right? The mere understanding about the value of cos 90 would help a lot in these type of questions. 7 question could have been trickier. I think you should avoid these type of questions in the exam for the first attempt because it requires a little bit of thinking, and even after thinking for 1 or 2 minutes, there is no surety that you will be able to crack such questions. So it is better to first to not go for these questions in the first round. This is again based on the understanding of compound interest. I think the only pain part about this question is that some students might got stuck here, right? That how to proceed with this part of thing. But if you know the successive formula, that is a plus b plus ab by 100, I think it makes your way easier to solve such kind of questions, right? So I think you should definitely take up these questions when the options are very different from each other. This is a repeated question from CAT 2023, and I think that's why somewhere your hard work and whatever you have done for the CAT does not go in vain. So if you have decent understanding or if you have practiced such questions, I think, and if some of you remember the direct answer of this question, I think you can directly mark this question, mark the answer, and proceed. Find the smallest number. I think again this was a sitter question. I mean, the mere understanding about how to go with such question could have helped. That you have to just find the LCM and that's it. उसके अलावा you don't need to do anything. 11th क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिख रहा है आपको कैसे प्रोसीड करना है. आपको एक ऑल्टरनेट रेशियो दे रखा है या चेंज्ड वर्जन दे रखा है एंड आपको ओरिजिनल वर्जन पे जाना है और उसके बाद इट्स जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन. द माय व्यू पॉइंट अबाउट दिस एग्जाम इज दैट कैलकुलेशन इतना हैवी नहीं था until and unless you get stuck somewhere, but the calculation was decent. The calculation was there in every question, but I think the level of calculation was very simple in each and every question. Trapezium ka, this was again a sitter question. I mean, if you have gone through the trapezium class, right, you must have encountered such questions a lot of times, right? So basically kahin na kahin snap ka, if I talk about the snap, I think the snap exam takes inspiration from the CAT only, right? जो CAT के बहुत easy या sitter questions होते हैं, that come in snap. So I think this is how the snap works. Just give me a minute. 13 question. So it is based on the faulty balance. So a decent understanding about the faulty balance, if you can figure out that this is the profit of 25%, the faulty balance is leading to a profit of 25%. I think that would have helped you. And also the options are very different, so you don't need to find the exact option. Just a mere understanding about the first 2 decimal points or first 2 integer points also would have helped in these questions. This question could have been trickier or might not have might not have clicked you in the exam. So avoid these kind of questions in the first round, because when you already have a lot of sitter questions, I think you can completely avoid these kind of questions. This was complete sitter. I mean, whenever you do probability PNC questions, you must encounter these type of questions, and there is nothing in these type of questions, right? Just a simple understanding of 6C2 or 13C2 can help you get an answer within 30-40 seconds. This question could have been lengthy. I mean, during the exam, maybe some students might get confused in these questions when it comes to solving 2-3 parts within one question. So this is a perfect CAT level question, right? And there is a chance of doing the mistake somewhere in between the calculation part. So maybe you can avoid, but when it comes to a difficulty level, I think it got a decent difficulty level, right? I mean, it was not on the easier side also, it was not on the difficult side also, it was easy to moderate type. This question could have create confusion, but be mindful of the fact that every time in these type of questions there are possibilities of 2 cases, right? So you can't proceed with just one case, and I think that's what they wanted to test you out through this question. And
I think the mention was correct, to be very honest. If in the first attempt only you have proceeded with this case, I think you were good to go. You don't need to take care about, or you don't need to worry about this case. So the students who have attempted this question and proceeded with this case only as a first attempt, I think they must have got the answer as 5 root 3. This was again a very basic question. It was not based on the average, it was based on the total sum only, right? So if you know how to do the total sum when the average is given, right, you must have got the answer to this question, right? That's it. Those are the official 18 questions which came in slot 2, slot 1, shift 2. I hope you like the session. If you like the session, please hit a like and please join our Telegram group and also support our channel. And that's it. And if you want any other type of videos, please comment down. And if you want to enroll in the ZDM booster course that we are starting, that we have already started, so you can go on our website and check the course structure and check the detailed video about how the course proceeds. That's it for today. Thank you, and please share the video uh, within your friend circle groups or with the students who are preparing for the same. Right. That's it. Thank you.